Hello students, welcome to Charu's classes. Let's continue with question number 11, exercise 1.1, relations and functions. Show that the relation R in the set A of points in a plane given by R is equal to PQ such that distance of point P from origin is same as distance from point Q from the origin is an equivalence relation. पहले इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट समझते हैं. यहाँ पे रिलेशन है बिटवीन सेट ए विच आर पॉइंट्स ऑन अ प्लेन. एक प्लेन पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनका ये सेट है. इसमें रिलेशन ये है दैट आर इज इक्वल टू पी कॉमा क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन. सो सपोज एक पॉइंट 0,0 ओरिजिन है. सो दिस पॉइंट सपोज वी कॉल इट ओ, इसका P से जितना डिस्टेंस है उतना ही उसका Q से डिस्टेंस है. सो वी कैन से ये रिलेशन है बिटवीन पॉइंट P एंड Q फ्रॉम द ओरिजिन. इफ ओरिजिन इज पॉइंट O देन OP इज इक्वल टू OQ. ये इसका रिलेशन है. इसे हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है एंड फर्दर शो दैट ऑल सेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P नॉट इक्वल टू 0,0 is the circle passing through P with origin as center. और उसके बाद हमें सेकेंड पार्ट प्रूव करना है, बट हम सेकेंड पार्ट पे बाद में आते हैं. लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट. सो हमें रिलेशन क्लियर है. रिलेशन उन सेट ऑफ पॉइंट्स का है जिनका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन सेम है. सो लेट्स फर्स्ट टॉक ऑफ रिफ्लेक्सिव कंडीशन. बिकॉज इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होना ज़रूरी है. रिफ्लेक्सिव कंडीशन होती है फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए. इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर देन इट इज़ रिफ्लेक्सिव. तो हमें ऐसा पॉइंट चेक करना है. हमें चेक करना है कि ए कॉमा ए रिलेशन में है या नहीं. सो सपोज देर इज़ अ पॉइंट पी, देन ओ पी इज इक्वल टू ओ पी. एक पॉइंट पी है, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस सेम ही होगा. So distance of point P from origin is OP and OP will be equal to OP. So it means that my point P comma P will belong to the relation. So this is reflexive. Now let's check if it is symmetric. Symmetric check करने के लिए if A comma B belongs to R and B comma A also belongs to R, then we say it is symmetric. तो हमें ऐसे दो पॉइंट्स लेने हैं. सपोज आई टेक OP एंड OQ. सो इफ OP इज इक्वल टू OQ, P का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वही Q का ओरिजिन है. OP इज इक्वल टू OQ, देन ऑफ कोर्स OQ विल बी इक्वल टू OP. Therefore my PQ, if it belongs to the relation, then my QP will also belong to the relation and therefore it is symmetric. Let's check for transitive. To prove that the relation is transitive, we need 3 points. Suppose I take A comma B, suppose it belongs to R, and B comma C if it belongs to R. Then if A comma C belongs to R, we can say that it is transitive, right? So let's take the points P, Q and R. So this is origin, this OP, suppose this distance is x, this OQ. So OP and OQ are related अगर दोनों distances origin से equal हैं. If OP is x and OQ is also x, तो P and Q are related. So P comma Q belong to R as the distance from the origin is same. Now let's take another point R and suppose that this distance OR is also x. PQ belongs to R as distance from origin, or you can say OP is equal to OQ. तो OP अगर OQ के इक्वल है तो PQ belongs to R. Then we have OQ is equal to OR
it will mean that Q comma R will also belong to this relation. अब अगर OP x है, OQ भी x है and OR भी x है, तो we can also say that P comma R also belongs to the relation because OP, which is x, is also equal to OR. इनका distance from the origin is same. So this relation is transitive also. Now if the relation is reflexive, symmetric and transitive, it is an equivalence relation. Second part of the question, further show that the set of all points related to point P not equal to 0, 0 is the circle passing through P with origin as center. वो ये कह रहे हैं कि हमें प्रूफ करना है कि the set of all points which are related to the point P, यहाँ पे लिखा है the set of all points related to a point P where P is not 0, 0. ठीक है, so यहाँ पे this O is the origin. अब OP अगर ये distance R है, if I make a set of points जो कि O से R distance पे हैं, they are all at a distance R, that set will actually make me a circle. So if my OP is equal to my OQ is equal to my OR is equal to my OS and so on, this is all equal to R. Let's consider a common distance R. तो ये मेरे वो सारे सेट्स हैं जो कि P से रिलेटेड होंगे, जिनका OP डिस्टेंस जो है वो सबका सेम होगा. सो डेफिनेटली अगर हम सर्कल भी बनाते हैं तो हम हाउ डू वी मेक इट, वी हैव अ पॉइंट द सेंटर एंड थ्रू द सेंटर वी टेक इक्विडिस्टेंट एक डिस्टेंस जो कि R होता है उसको हर डायरेक्शन में लेते हैं, तो what we get is a circle. It is a set of infinite points which are equidistant from a point which is the center of the circle. तो यहाँ पे this is going to make a circle. Question number 12. Show that the relation R is defined in the set A of all triangles as R is equal to T1, T2 such that T1 is similar to T2 is equivalence relation. Now यहाँ पे A है, it is set of all triangles और जो हमारा relation है that is between T1 and T2 such that T1 is similar to T2. तो ये relation हमारा set of triangles के बीच में है which are similar to each other. So we have to first thing prove it as an equivalence relation. So first let's check the reflexive condition. Now if T1 is a triangle, T1 is always similar to T1. Triangle T1 is always similar to triangle T1. अपने आप के साथ definitely two triangles जो हैं, अगर हम एक ही ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो वो अपने आप से सिमिलर होगा ही. सो वी कैन से T1, T1 always belongs to the relation. So it is reflexive. Let's check the symmetric condition. Now if triangle T1 is similar to triangle T2, that means T1, T2 ये relation को belong कर रहे हैं. Then we can say triangle T2 is also similar to triangle T1. तो T2, T1 ये भी relation को belong करेंगे because triangle T2 will also be similar to triangle T1. So this is a symmetric condition. Let's check the transitive. If triangle T1 is similar to triangle T2 and triangle T2 is similar to triangle T3, T1 triangle T2 से similar है, T2 triangle T3 से similar है, therefore triangle T1
is similar to triangle T3. So we say if T1 comma T2 belongs to the relation and T2 comma T3 belongs to relation, then T1 comma T3 will also belong to the relation. So this is transitive also, and therefore since it is reflexive, symmetric and transitive, this is an equivalence relation. Consider three right angle triangles, T1 with side 3, 4, 5, T2 with sides 5, 12, 13 and T3 with sides 6, 8, 10. Which triangles among T1, T2 and T3 are related? So let's first write T1 के sides 3, 4 and 5 given है, T2 के sides 6, 8, T2 के sides 5, 12 and 13 given है, and T3 के sides 6, 8 and 10 given है. We have to check which of them are related to each other. We know the relation is that two triangles are similar to each other. So जब भी two triangles एक दूसरे से similar होते हैं, उनकी sides are in a same ratio. For example, if I take this triangle and it has A, B and C, another triangle, so suppose I have this as, okay, let's take A, B and C only. तो ये जो दूसरा ट्रायंगल होगा, अगर ये उसके सिमिलर होगा तो इनकी साइड्स कुछ इस टाइप की हो सकती हैं, 2A 2B 2C या 3A 3B 3C, so that A by 2A should be equal to B by 2B should be equal to C by 2C, या फिर ये 3 टाइम्स हो सकता है, 4 टाइम्स हो सकता है. बेसिकली इनका जो रेशियो है, जैसे दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है, दिस शुड कम एज इक्वल. अगर वो इक्वल आ जाता है, then we say that the triangles are similar. So let's just check. Let's check T1 and T2. So T1 and T2, if I take the ratio of the sides, ratio of corresponding sides, 3 by 5, 4 by 12 and 5 by 13. 3 by 5 और simplify नहीं हो रहा, 4 by 12 1 by 3 हो जाएगा and 5 by 13 भी और simplify नहीं होगा. So as we can see, none of these are coming equal. The ratio of sides are not in proportion. Since it is not in proportion, they are not similar triangles. So T1 and T2, they are not similar. Let's check T2 and T3. So T2 and T3, we have 5 by 6, 12 by 8 and 13 by 10. 5 by 6 और simplify नहीं होगा. 12 by 8 we can write it as 3 by 2 and 13 by 10 भी और simplify नहीं होगा. So as we can see, again here the ratio of the sides in T2 and T3, they are not equal, they are not in proportion and therefore they are not similar. T2 and T3 are also not similar triangles. Now let's check T1 and T3. T1 has 3, 4, 5 and T3 has 6, 8, 10. So 3 by 6, 4 by 8 and 5 by 10. So the ratio of sides in this case, as you can see, it's coming equal. So since the ratio of the sides is in proportion, triangle T1 and triangle T3 are similar and therefore they are related. Question number 13. Show that the relation R defined in the set A of the polygons as R is equal to P1, P2 such that P1 and P2 have same number of sides is an equivalence relation. What is the set of all elements in A related to the right angle triangle T with sides 3, 4 and 5?
पहले लेट्स चेक सेट ए. सेट ए जो है इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स. पॉलीगन्स होते हैं हमारे क्लोज्ड फिगर्स विच आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स. तो क्लोज्ड फिगर जो सिर्फ लाइन सेगमेंट्स से बने हैं उन्हें हम पॉलीगन्स बोलते हैं. जो सबसे छोटा पॉलीगन होता है वो ट्रायंगल होता है. सभी ट्रायंगल्स पॉलीगन्स होते हैं. सो ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स दे आर 3-sided पॉलीगन्स. 4-sided में जितने भी क्वाड्रिलेटरल होते हैं, स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपीजियम है, या एक नॉर्मल कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कोई भी साइड पैरेलल नहीं है, ऑल दीज आर ऑल्सो पॉलीगन्स. pentagons with 5 sides they are polygons. So figures which are made up of line segments are called polygons and they are closed. अब यहाँ पे जो रिलेशन है P1, P2 it has same number of sides. So same number of sides का रिलेशन है. That means if I take triangles जिसमें 3 sides होती हैं तो सभी triangles आपस में related होंगे because they have same number of sides. सभी quadrilaterals they will also be related to each other because they have same number of sides. हमें यहाँ पे prove करना है that this relation is an equivalence relation. So let's first begin with the reflexive relation. Let's check if it is reflexive. So any polygon P which has any number of sides, suppose उसमें 3 sides हैं किसी भी polygon में, तो वो अपने आप से तो रिलेटेड होगा ही बिकॉज रिलेशन है, दे हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स. सो P1, P1 विल ऑलवेज बिलोंग टू द रिलेशन बिकॉज P1 हैज सेम नंबर ऑफ साइड्स एज P1. सो डेफिनेटली P1 P1 से रिलेटेड होगा, P2 P2 से रिलेटेड होगा, P3 P3 से, एंड सो ऑन. सो दिस इज गोइंग टू बी अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. Now let's check symmetric. If P1 and P2 they belong to the relation, it means what? That P1 and P2 have same number of sides because relation यही है. So if P1 and P2 have same number of sides, then I can write P2 and P1 also have same number of sides, which means my P2, P1 will also belong to this relation. तो ये सिमेट्रिक भी होगा. नाउ लेट्स चेक फॉर ट्रांजिटिव. सपोज माई P1 एंड P2 आर इन द रिलेशन. इसका मतलब क्या हुआ कि P1 की जितनी भी नंबर ऑफ साइड्स हैं, सपोज 5 साइड्स हैं, तो P2 में भी 5 साइड्स हैं, एंड माई P2 इज रिलेटेड टू P3. इसका मतलब अगर P2 में 5 साइड्स हैं तो P3 में भी 5 साइड्स हैं. So therefore my P1 will always be related to P3. You can write it in sentence form that P1 and P2 have same number of sides, P2 and P3 have same number of sides, therefore P1 and P3 will also have same number of sides and therefore it is a transitive relation. अब हमारा relation reflexive, symmetric and transitive है, therefore it is an equivalence relation. What is the set of elements in A related to the right angle triangle T with sides 3, 4 and 5? यहाँ पे sides का measurement दिया है 3, 4 and 5, but question है what is the set of all elements in A related to right angle triangle with these sides? हमारा relation है between the polygons which have same number of sides. तो अगर एक triangle है उसकी sides कुछ भी हों, 3, 4, 5 गिवन है, तो साइड की लेंथ पे रिलेशन नहीं है. द रिलेशन इज सेम नंबर ऑफ साइड्स. सो सिंस इट इज़ अ ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल विल बी रिलेटेड टू all sets of triangles. It will be related to all triangles. Why? Because they have same number of sides. Question number 14. Let L be the set of all lines in xy plane and R be the relation in L defined as R is equal to L1, L2 such that L1 is parallel to L2,
Show that R is an equivalence relation and find the set of all lines related to the line y is equal to 2x plus 4. XY plane में there are lines and relation is between the lines which are parallel to each other. तो ऐसी बहुत सारी lines होंगी which will be parallel to each other. इन सब में relation है. We have to show that R is an equivalence relation. So first let's check the reflexive relation. So there will be a line L. L comma L will always belong to R, as L will always be parallel to itself. जो line है, it is always going to be parallel to itself. So it is going to be a reflexive relation. Let's check the symmetric relation. If L1 comma L2 belongs to R, इसका क्या मतलब हुआ? अगर L1 L2 belongs to R, इसका मतलब है कि L1 is parallel to L2. अगर line L1 L2 के parallel है, तो we can also say that L2 comma L1 also belongs to R, which means L2 भी L1 के parallel होगी. So this you have to write in a sentence form, that if line L1 is parallel to L2, L2 will always be parallel to L1. Therefore, L1 L2 will be belonging to R and L2 comma L1 will also belong to R. तो ये relation symmetric होगा. Let's check transitive. अगर L1 L2 से parallel है, that means they belong to the relation. L2 L3 के parallel है, that means they also belong to the relation. Then automatically L1 is going to be parallel to L3. Right? आप यहाँ पे इस फिगर में भी देख सकते हैं L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 L3 के पैरेलल होगी. So therefore this relation is going to be transitive also, and therefore since it is reflexive, symmetric and transitive, this is an equivalence relation. Find the set of all lines related to the line y is equal to 2x plus 4. एक लाइन है y is equal to 2x plus 4. We have to find कि इस लाइन से रिलेटेड कौन सी दूसरी लाइन्स हैं. जब भी एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल होती है तो वी नो कि उनका स्लोप इक्वल होता है. द लाइन्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर, so if L1 is parallel to L2, their slope is same. तो हमारी जो जनरल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y is equal to mx plus c, यहाँ पे m जो है दैट इज़ द स्लोप. तो जो भी लाइन है अगर उसका स्लोप सेम है तो दोज लाइन्स आर गोइंग टू बी पैरेलल टू ईच अदर. इस पर्टिकुलर इक्वेशन में y इक्वल टू 2x प्लस 4, इफ़ वी कंपेयर इट विद y इक्वल टू mx प्लस c, हमें दिख रहा है दैट द स्लोप इज़ 2. So all the lines with the slope 2 will be parallel to this particular line. So the line y is equal to, m की जगह हम 2 रखेंगे, y is equal to 2x plus c. These are the equations of the lines which will be related to or which will be parallel to the line y is equal to 2x plus 4. Question number 15. Let R be the relation in the set 1, 2, 3, 4 given by R is equal to 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3 and 3, 2. Choose the correct answer. So इसमें हमें check करना है if it is reflexive, symmetric or transitive. It's an MCQ question. So first let's check if it is reflexive. 1, 1, 2, 2, 3, 3, they all belong to the relation. So definitely it is reflexive. Let's check if it is symmetric. So I can see 1 comma 2 here, it belongs to relation, but 2 comma 1 it does not belong to relation, so it is not symmetric. Transitive check करते हैं. So we can see 1 comma 2 belongs to relation, 2 comma 2 belongs to relation,
तो 1 2 से रिलेटेड या 1,2 ऑलरेडी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो यहाँ तो ये ट्रांजिटिव है. लेट्स चेक मोर. इफ आई से 1,1 belongs to relation and 1,3 belongs to relation, तो 1,3 भी part of relation है. So yes, it is transitive. You can check for all. यहाँ पे reflexive and transitive आ रहा है, but it is not symmetric. So the correct option is option B. Question number 16. Let R be the relation in the set N given by set N यानी set of natural numbers given by R is equal to AB such that A is equal to B minus 2, B is greater than 6. Choose the correct answer. B is greater than 6, ये natural numbers के बीच में ये relation है. So 1 2 3 4 and so on. But जो B है, जो second part of the set है, suppose A यहाँ से आता है तो B यहाँ से आ रहा है. So this B is greater than 6. तो जो relation है वो 6 से बड़े numbers के बीच में है, means 7 8 9 and so on. और relation क्या है? A is equal to B minus 2. So let's check the options. 2,4. तो यहाँ पे B is less than 6 और 7. So definitely ये option incorrect है. Second option 3,8. तो यहाँ पे B तो definitely greater than 6 है. But if I check A, अगर B को मैं 8 लेती हूँ तो my A is coming 6 and not 3. तो ये relation भी correct नहीं है. When A is 6, then B is 8. So my third option is the correct one. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.